Hi everyone. So today we are going to discuss about, and we will be continuing with the same chapter, that is of the human reproduction part, and we will be discussing about the very important topics, which is spermatogenesis and oogenesis. तो क्योंकि हम NCERT का part finish कर रहे हैं with the this 3D models and all these concepts. So we will be discovering all those things. That means we will be covering all those sections through the parts of in this section. So whatever the important things or whatever the important aspects or topics that we will be discussing about, so we will be discussing in detail with the help of models and with the help of NCERT. All right, so this is basically a very new batch which is going to start, and that is about the and it is for both 11th and 12th specifically. And the batch for the 11th is known as the intercept batch, and for 12th it is called as the emerge batch. All right, so this is going to go live from 18th of May. 18th of May se start ho raha hai ye batch, so you can enroll yourself. All right, and we will be covering each and every part of your NCERT along with these models, which you can see on your screen like this. तो इस तरीके से हम इंटरैक्टिव क्लासेस के थ्रू 3D मॉडल के हेल्प के थ्रू हम लोग सारे पोर्शंस को कवर अप करेंगे along with all the daily practice papers and PDF and notes and all those things. So you will be benefited with a lot of things along with the point of your competitive point of view as well. All right, so let us just start now. सो बेसिकली हम लोगों ने ये जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो दैट वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को कवर अप कर लिया था along with the description of your mammary glands and all those things, है ना, वो सारी चीजें देखी थी. And the last part that we did was the mammary glands itself, and along with that we also talked about and discussed about the this one, your the external female genitalia part. Now, in this lecture, we will be discussing about the spermatogenesis process and the sperm structure process. Let me just show you. So for showing you the model, we can have a cross section of the seminiferous tubules first, like this. All right. This is the section of the seminiferous tubule. Just a moment. Let me just reload this model a little. Let me just come up to the page of, I guess this is little. Yeah. So let's just talk about the
sperm structure first, and then we will discuss about the section of the seminiferous tubules. We'll come to this part first. Okay, so you can see on your screen the model of the or the structure of the sperm. So let me just label all the components. So sperm is basically the product of the spermatogenesis. We all know this, all right. And sperm जो होता है ये spermatogenesis से क्योंकि बनता है, and it is the male gamete, which is ultimately going to undergo the process of fertilization and will ultimately produce a zygote. So this is the main structure to be formed, all right. तो ये पहला ऐसा main structure है जो कि बनेगा and will ultimately result, and its structure is something which gets a sperm divided into different 3 sections of different 4 of the sections, all right. So इस model में जब हम देंगे तो we will be first labeling all the components first, and then we will be discussing about each of the component individually, all right. So this is basically the head part of the sperm, which you can see over here. So this represents the head part. This represents the neck part, neck of the sperm. This entire is the middle piece part, all right, and this becomes the tail part. So a sperm structure is divided into 4 distinct parts: head, neck, middle piece, and tail. So you can see over here that it's a microscopic structure in which the entire structure is primarily divided into 4 distinct components. That means head, neck, and middle piece and tail. Here, head, neck, and middle piece, tail में divided होता है. So on the sidewise, you can see the structure over here also as well. All right. So this basically head has basically 2 components. It has the presence of acrosome over here. All right. So here it has the presence of acrosome. Acrosome basically represents the anterior part of the, ये सामने part को represent करता है. So this is the acrosome, while this represents the nucleus of the head. तो basically जो 2 part होते हैं वो ये acrosome और nucleus वाले part था जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है, A and N. That means acrosome and the nucleus part. That is the case. Now this acrosome is basically filled up with very, very 2 important enzymes. That is called, ये digestive enzymes है ना, filled up होता है. तो ये 2 digestive enzymes इसमें filled up होता है, which is called as acrosine and hyaluronidase. So it is filled up with 2 digestive enzymes. और इन digestive enzymes का काम ये होता है that they are going to lyse the membrane of the ovum. जो zona pellucida layer होता है ovum का, when we will be discussing about the structure of the ovary, तो specifically the ovum, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो enzymes होते हैं दोनों वो कैसे digest करते हैं उसके wall layers को. So these basically are responsible, since these are digestive enzymes, so they are going to digest the wall of the, digest the wall of ovum, wall layers you can say. उनको ये digest करते हैं so that the penetration of sperm becomes easy and it can carry out the process of fertilization, है ना, ये वाला part हो जाएगा. तो ये acrosome में होता है. न्यूक्लियस हमें मालूम है कि न्यूक्लियस जो होगा वो क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करेगा. सो दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम इन टर्न कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल पार्ट हैविंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यूजुअली हैप्लॉइड होता है. नेक वाला एक पार्ट हो जाएगा व्हिच इज दिस पार्ट व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका नेक के पार्ट में ही आएगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रियोल. मिडिल पीस जो होता है, मिडिल पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है, so this is primarily responsible for producing a lot of energy in the form of ATP. और ये ATP जो होता है वो ultimately sperm motility में help करता है. That means the movement of the sperm from the movement or the motility of the sperm inside the female reproductive tract, ये उसमें help करता है. So that's why this is very very important. While tail is basically meant for propulsion. Propulsion means to move forward. ये propulsion में basically help करता है so that the sperm can move from one part or from one side to the another side. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं exactly all those things have been given. All right.
So it basically, the sperm head contains an acrosome. Acrosome is filled with enzymes, though the enzyme names have not been given, but I have written over here. All right. So ये आपका हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में. मिडिल पीस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, एंड फर्टिलाइजेशन बिकम्स easy, very very easy. You know, on an average, if you are going to see, ठीक है, जब हम, so this is basically the longitudinal section of sperm that has been drawn, you can see. All right, and if I just slice out, you can see that this is the head part basically. All right, then this becomes the tail part, which you can see over here, and this becomes the middle piece part, which can be dragged actually. This is the tail part, and this is the middle piece part, which can be dragged like this. So head, neck, middle piece, and tail. This is the organization. So we are going to connect all these things. All right, now human male basically ejaculate. The ejaculation process in case of the human males, अब हमें sperms के बारे में तो पता चल गया, but हमें ये जानना है कि exactly कितना amount of sperms जो होते हैं वो release होते हैं during the process of ejaculation. So for that part, basically you can see that human male is basically responsible for ejaculating around 200 to 300 million sperms. So ejaculation के टाइम पे तो 200 to 300 million sperms ejaculate होते हैं. तो इसमें से कुछ 200 to 300 million sperms का ejaculation होता है. But जब उनके एक्टिविटी की बात आती है ना, तो 60% of them कुछ ऐसे होने चाहिए that should have a normal shape. At least 60% of इसमें से normal shape के होने चाहिए sperm, and at least 40% of them. तो शेप उनका 60% का उनका नॉर्मल होना चाहिए, एंड रिमेनिंग जो 40% होते हैं उनका जो ये होना चाहिए, मोटिलिटी होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी नॉर्मल. मोटिलिटी कहने का मतलब हो जाएगा मूवमेंट, द एबिलिटी टू मूव. ठीक है, दैट शुड बी रियली रियली नॉर्मल. तभी हमें, बिकॉज स्पर्म, जो भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन कराते हैं ना, तो उनके साथ ये होता है सीन कि दैट स्पर्म हैज टू बी परफेक्ट फ्रॉम टिप टू टो. मतलब हेड से लेकर के टेल तक दैट हैज टू बी कंप्लीटली परफेक्ट. तो वो जो परफेक्ट स्पर्म होता है वो हमें तभी मिलेगा व्हेन आउट ऑफ दीज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जब हम इसका पूरी तरीके से जब व्हेन इंस्पेक्शन इज बीइंग डन, तो एक परसेंटेज हमें मिलता है, एंड दैट परसेंटेज इज दिस वन. This question has also been asked in your NEET examination. All right, so this is the case. Now, okay. Now, the next important point to note in this part is that basically, let us just talk about the semen. Now, sperms which are released from the seminiferous tubules, they are transported by the accessory ducts के बारे में मैंने आपको already बताया हुआ था. तो once the sperms they are formed, so they have to be released into the seminiferous tubules. तो seminiferous tubules से जब वो release होते हैं, तो ultimately they pass through some important ducts. डक्ट्स के थ्रू वो पास होंगे, जिसमें आपका रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफिडेंस या एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इन सब से पास होते हुए अल्टीमेटली वो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं. सो सीमेन होता क्या है? सीमेन इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी एज द सेमाइनल प्लाज्मा, है ना, व्हिच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्पर्म along with other important components that might include your fructose, calcium. इन सबका ये पूरा का पूरा association होता है. So there is fructose, then there is calcium, then there is certain enzymes, then there is prostaglandins, then fibrinogen. ये सारे structures, ये सारा का सारा पूरा constituent होता है जो semen या seminal plasma को बनाता है. Clear? So this has also been written. और इसका secretion कहाँ से होना है? इसका सिक्रीशन जो होना है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, देखो स्पर्म्स तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिलीज कर देगा, लेकिन जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है दैट इज बीइंग सिक्रीटेड फ्रॉम द एक्सेसरी ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया है.
तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. सो दैट इज द केस व्हिच हैज बीन रिटन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में. Now let us just talk about the next topic, and that is called as your gametogenesis, जिसमें हम seminiferous tubules के section की बात करें. ठीक है, so on the left side of your you can see the structure or the section of the seminiferous tubule, and here also you can see the section of the seminiferous tubule. यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे. ठीक है, this is the case. Now सबसे बड़ी बात ये होता है कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस दो तरीके का होता है. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि गैमेट को बनाना है. दैट मीन्स टू फॉर्म गैमेट. क्लियर? सो गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज gametogenesis. All right, now if this process of gamete formation, in this process of gamete formation, it is usually of two types. ठीक है, या तो sperm बनेगा और या तो ovum बनेगा. दो possibilities होते हैं बनने के, या तो sperm या तो ovum. So if there will be the formation of sperm, then it is called as spermatogenesis over here, and if there will be the formation of ovum, then it will be called as oogenesis, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो गैमेटोजेनेसिस के स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस करना है. ऑलराइट, सो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वेयर दे रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. नाउ गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व होगा वो हमारा स्पर्मेटोगोनियम होगा. ठीक है, सो स्पर्मेटोगोनियम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू स्पर्म. ये हमें मालूम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब हम देखते हैं तो उसमें ये दिखता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो मेन सेल होता है. नाउ लेट मी जस्ट लेबल ऑल द कंपोनेंट्स फर्स्ट. तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो दिस बिकम्स योर स्पर्मेटोगोनियम, है ना. ये आपका मेन इमेच्योर मेल जर्म सेल है जो कि अल्टीमेट, और ये डिप्लॉयड नेचर का रहता है. सो सिंस इट इज डिप्लॉयड, सो इट विल बी हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट दिस इज द सर्टोली सेल्स व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स. दैट मींस स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, ये वाला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सो दिस बिकम्स द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो अल्टीमेटली आपका आता कहाँ से, स्पर्मेटोगोनियम से है. तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉयड होगी, 2n हो जाएगी. ठीक है, दिस बिकम्स द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. दिस बिकम्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड अल्टीमेटली ये वाला जो आपका पार्ट हो जाएगा, ये वाले जो जिनका जो एकदम इमेच्योर होते हैं, जिनके हेड्स एकदम एम्बेडेड है यहाँ पे, ये हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स. एंड स्पर्मेटिड्स के बाद अल्टीमेटली जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होगा वो मेच्योर स्पर्म्स का होगा, जो कि हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स भी बोलेंगे. तो प्रोसेस मेरा कैसे बना, सीक्वेंस मेरा कैसे बना है, हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनियम हुआ, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स. सो देयर आर 5 स्टेप्स: स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म. ठीक है, अब हम ये देखेंगे दैट हाउ दीज सेल्स आर अल्टीमेटली फॉर्म, हाउ दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टू फॉर्म दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस विल बी द केस. नाउ फॉर शोइंग यू दैट पार्ट वी कैन यूज द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. Here. All right, तो अगर हम फ्लो चार्ट को यूज करें, सो यू कैन सी ओवर हियर, ऑल राइट, कि द प्रोसेस स्टार्टेड विद द स्पर्मेटोगोनियम. तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो प्यूबर्टी से शुरू होता है. यू कैन सी दैट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर, प्यूबर्टी. सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विद प्यूबर्टी, ऑल राइट, एंड
ये जो स्पर्मेटोगोनियम होगा, दिस विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिफरेंशिएशन. सो इफ इट विल माइटोटिक डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये दैट दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स नंबर. ठीक है. सो इफ आई जस्ट शो यू हियर, wait, or we can just shift this model a little bit so that the explanation becomes easy. है ना? तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू होता है स्पर्मेटोगोनियम से. दिस इज द केस विद स्पर्मेटोगोनियम. यहाँ समझिए. ठीक है. अब स्पर्मेटोगोनियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट दिस इज डिप्लॉयड नेचर. सो इफ इट इज डिप्लॉयड इट विल बी हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, दिस इज गोइंग टू डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 सेल्स. है ना? और ये कैसा डिफरेंशिएशन कर रहा है? माइटोटिक डिफरेंशिएशन कर रहा है. सो बेसिकली इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ओवर हियर. ठीक. तो ये डिफरेंशिएट किया, फिर ये अपना नंबर बढ़ाता है लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स नंबर लाइक दिस. ठीक है. तो ये जब अपना नंबर बढ़ाएगा, सो द सेल व्हिच इज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है. तो क्योंकि ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन है, सो द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन कांस्टेंट. वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक. तो ये भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड होते हैं एंड दे आर आल्सो हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ टेकिंग वन एज द एग्जांपल, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं. माइटोसिस डिफरेंशिएशन इसमें इसीलिए जरूरी होता है so that it can mature itself. The germ cells can mature itself and they are going to increase their number. That's why. ठीक है. तो ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे, so now this primary spermatocyte will undergo the first meiotic division. तो जब ये first meiotic division कराएगा, so we all know that first meiotic division is a reductional division. ठीक. तो ये डिवाइड करके further 2 सेल बनाएगा like this. ठीक है. और ये जो 2 सेल बनाता है, that is called as the secondary spermatocyte. तो ये अल्टीमेटली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा होता है, which is having or which is haploid and having 23 number of chromosome. Why? Because meiosis 1 is a reductional division. तो क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा. That's why. ठीक है. फिर अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, दैट मीन्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से डिवाइड करेंगे. तो ये जब डिवाइड करते हैं लाइक दिस, so they are going to give rise to, they will actually undergo the process of second meiotic division. तो इसमें जब second meiotic division होगा, second meiosis होगा, तो ये ultimately बनाएंगे next pattern of cell which are called as the spermatids. तो इसमें second meiotic division हुआ, तो ये फिर से 4 सेल बना देंगे. क्लियर? लाइक दिस. ये हमारे 4 सेल बन जाएंगे. तो मियोसिस 2 जो होता है, ये हमें मालूम है कि दैट इज एन इक्वेशनल डिवीजन. तो जितना क्रोमोसोम नंबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में था, उतना ही क्रोमोसोम नंबर हमारे स्पर्मेटिड्स में होगा. मतलब ईच ऑफ द स्पर्मेटिड्स विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ, each will be having a total of n number of chromosomes that will be haploid and having 23 number of chromosomes in them. This will be the case. Now each of these spermatids, ये जो चारों के चारों जो spermatids होते हैं ना, ये चारों के चारों spermatids individual sperms में differentiate करेंगे. So each of them, they are going to differentiate into individual sperms like this. ठीक. तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएगा. So the process through which they are going to differentiate into individual sperm, that is called as spermiogenesis. All right. तो इसको हम spermiogenesis बोलेंगे. So these are the cells. तो मैंने आपको बोला ना, क्योंकि 5 सेल होते हैं, so all these 5 cells, they are covered up over here. So the same thing it has been written over here with the chromosome number pattern over here. You can see like this, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको explain किया हुआ. Clear? So that is the case. All right. So इसमें हम लोगों ने देखा कि 4 तरीके के, मतलब basically starting from the spermatogonium, there are 5 types of cells which are formed. हमें सिर्फ प्लॉइडी ध्यान में रखना है, हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स ध्यान में रखने हैं कि हर स्टेज में
कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे. ऑल राइट. एंड क्योंकि लास्ट हमारा जो बनना है वो आपका अल्टीमेटली स्पर्म्स बनना है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. एंड स्पर्म्स जब बन जाते हैं ना, तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि उनकी जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में ना एम्बेड हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द हेड ऑफ द स्पर्म, क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं तो उनको नरिशमेंट चाहिए होता है, तो दैट्स व्हाई उनका हेड जब उस सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है ना, so after getting nourishment they are ultimately released from the Sertoli cells through the process of spermiation. ठीक है. So there is a difference between spermatogenesis, ठीक है, spermatogenesis, then the spermiogenesis and spermiation. There is a difference between all these three processes. ये जो होता है ये ओवरऑल पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं. दैट मींस स्पर्मेटोगोनियम फॉर्मिंग स्पर्म, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम दिस स्पर्मेटिड. जो यहां से बनता है ना उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. एंड स्पर्मिएशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ स्पर्म्स cells from the Sertoli cells after getting nourishment. ठीक है. So this is all about the process of the spermatogenesis. अब इसमें मैंने आपको जो चीज बताई है, इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि it starts with the puberty stage. प्यूबर्टी में शुरू हो जाएगा. That means at an age of your 13 or 14 में शुरू हो जाता है. And because of the rapid secretion of two hormones, एक LH हार्मोन की वजह से और दूसरा FSH की वजह से, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके वजह से द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दैट गेट्स स्टिम्युलेटेड, इन दोनों की वजह से. ठीक है. क्योंकि जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स. ये मैंने आपको बताया था, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराते हैं. व्हाइल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर प्रोसेस. ये पूरे के पूरे प्रोसेस को ही कंट्रोल करता है. मतलब किस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन रहा है, ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है ओवरऑल. सो दैट्स व्हाई दीज टू हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो दोनों के दोनों हार्मोन्स होते हैं ना, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स GnRH के कंट्रोल में होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उनको बोला जाता है. दैट इज द केस. लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है. तो ये it starts at the age of puberty because of rapid secretion of this GnRS, which is the hypothalamic hormone. ये फिर अल्टीमेटली दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन कराता है, दैट मींस योर LH एंड योर FSH. तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन बता दिया कि LH जो होगा वो एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कराएगा, दैट मींस द टेस्टोस्टेरोन. एंड जो FSH होता है दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इन सब ये जो प्रोसेसेस होते हैं that is ultimately being carried out through this process of this through this hormone of follicle stimulating hormone. All right, so this was all about the process. We have process of spermatogenesis, and we have also seen the structure of the sperms as well. So in the next lecture we will be discussing about the further process of oogenesis and all those things. And our batch is going to start from 18th of May. So do enroll yourself and do join for the entire revision of your 11th and 12th biology. All right. In a very, very easy and an interactive way. All right. Thank you.